Okay, so this one is a group discussion session, and I'll be giving you one topic which is related to current, and then at the end I'll give you the document also for this topic, which you should go through. So you people are already aware about the format of GD. I'll give you 2-3 minutes to jot down the points, and then I'll give you time to discuss. And one of you will start the discussion, and then you will discuss among yourself, and one of you will conclude the session. So the topic which I'm giving you is culture of political freebies in India. तो पॉलिटिकल फ्रीबीज आपको पता है इलेक्शन के टाइम पे जो आप फ्री में बांटते हो लोगों को. इट कैन बी एनीथिंग. सो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल फ्रीबीज. तो कल्चर ऑफ पॉलिटिकल फ्रीबीज इन इंडिया. तो you know what to speak about it, and it's quite in news nowadays. So write this topic in your copy, and then after a couple of minutes we can start the discussion. So culture of political freebies in India. Culture of political freebies in India. Okay, friends, please unmute yourself, each one of you now, and be visible. Unmute yourself. Each one of you, please unmute yourself. Okay, so now one of you can start the discussion. Good morning, everyone. I'm Rohit. Today's topic is culture of political freebies in India. So it is a quite recent topic and current in news, and we always see is in this type of freebies, especially at the time of election. So first off, I want to define what is freebies. When the political parties try to influence the voters at the time of election, give some type of money or some other thing like cycle or computer at the time of election without any work to voters. So that is generally called freebies. Uh, so also we can see in other dimension like it give the burden to the government fiscal, and it has some advantage at the some cases but very limited, and very much disadvantages are present. But you can differ with these thoughts. So recently we have seen this in Karnataka. Government has announced for 12th and graduated student. So with this I open the house for the discussion. Yes, Rohit, और ये there is lot of disadvantage of free bias. One of them is the political party. Friends, before going to the discussion, first let us discuss the dimension, because otherwise it will be very difficult to conclude for those who conclude the discussion. I think first we discuss the dimension, what in which dimension we are going to discuss this topic. Then the dimension is like this. First we have to discuss the current culture of the political freebies in India. Second, we then go to the impact of this political freebies in India, and then at last we should go for the methods to improve the situation. This may be yes, I request all of you to discuss these three dimensions only. Otherwise, it will be very difficult to conclude. No, friend. What dimension? If someone getting later good point, he should go for that. So let's start. JD guys, ना ये JD है ना? Guys, freebies का जो कल्चर है वो I want to add one point on this. जो फ्रीबीज कल्चर है ना, वो ना वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक मतलब वो अट्रैक्ट करता है, जिसमें गवर्नमेंट है ना वोटर्स को प्रोवाइड करती लाइक स्मार्टफोन्स वगैरह, जिससे वोटर्स है ना अपने जो मोरल वैल्यू है उसको लूज करते जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लूज करते हैं. तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका. यस फ्रीबीज का एडवांटेज भी है. इसका एडवांटेज हमने कोविड के टाइम पर देखा था. कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि जो
पुअर्स है उनको जो खाना वगैरह है वो गवर्नमेंट ने फ्री के अंदर प्रोवाइड किया था। तो ये हमारा एक फ्री बीज का एडवांटेज भी है। इसको हम एग्जैक्टली फ्री बीज तो नहीं बोलेंगे, पर क्योंकि जो राशन वगैरह है वो फ्री के अंदर दिया गया था कोविड के टाइम पे, तो एक अच्छी चीज भी थी। इसके अलावा फ्री बीज दी जाती है जब जैसे स्टूडेंट्स वगैरह अगर No, अच्छे Aman, मार्क्स I लाए, am तो उस कंडीशन totally के अंदर disagree अगर फ्री with बीज दी you जाए तो वो because काफी at अच्छी है। that time, at Yes, that Hemant. time हाँ that यस, was not for political party because because that time it is necessary to provide some feed or any thing that in corona period that was necessary for poor, that we cannot counter them for political advantage because at that time that was necessary, but I agree Yes, with you, Yogendra, without any but the main I agree with you again. The freebies are without the sometimes are being necessary for the India to be survive the technical, we can say, economical difficulties in our India. But most of the time we have seen the freebies are being distributed just before the political elections is been going on. We can see different types of price cuts, different types of new announcements, inauguration of the multi-million projects, which can mainly used to attract the voters to vote any particular yes, political Ayush, party. it's in it's Karnataka not there is also true. It was It's in the not case true. when कर्नाटका में भी जो है 100% political जो है अगर वहाँ पे जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की अभी रिसेंट जो उन्होंने बिल पास किया है कि 10th और 12th जो भी ग्रुप सी की जॉब होगी उसमें 100% वो रिजर्वेशन वहाँ के केवल लोगों को ही देंगे, और इवन हायर पोस्ट के लिए भी वो 50% का रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो दैट इज नॉट I गुड think बिकॉज reservation is the not topic. first, I want to say that we should be clear that the government policy and privilege. The policy is हाँ something government is doing for the welfare of the country, welfare of the people. But freebies that come just like you can get 6 months before or 5 months before the election to influence the voter. The main point is in freebies is it came before the election. Uh, I and believe the freebie culture in India is being unrooted in a very deep manner, and we can see in the most of the elections or any political event, the freebies are being spread out. Freebies are being distributed among the different parts of India to attract voters, and also different political parties use this freebie to attract voter and gain some voter support to win the political यस, election. और I want आयुष to फ्रीबीज फ्रीबीज का वोटर फ्रीबीज को के भी टर्म में समझना ना होगा कि फ्रीबीज फ्रीबीज के टर्म फ्रीबीज में एक्चुअल में जो फ्री नहीं फ्री होती है, इसके लिए एजुकेशन हमको है, ही कॉस्ट पे करनी होती है। जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी होती है वो फ्रीबीज के माध्यम से वोट को अट्रैक्ट करती है, बट फ्रीबीज के बहुत सारे डायमेंशन भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम अनाज या फिर पैसे गवर्नमेंट also try to give reservation also to attract the votes. That was not the case of any schemes. That फ्रीबीज can इन also टर्म्स ऑफ be in The freebie. reservation is not come in फ्रीबीज the freebies, friends. friends, I फ्रीबीज इन want टर्म्स ऑफ फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर like is what are good the for those disadvantages? who need it. Freebies in I terms of agree. I free agree. education, Free water, free free electricity, educations are free necessary, but water. other things are unnecessary. Hmm. So I you are right. I what agree are with you. Yes, But Srikant, you are right. Free water, free the electricity, that is the freebies considered for political party. They try to attract the voter by giving free water, free electricity. Just like example of Delhi government. Delhi government has given water supply and nearly 200 units to every household to attract the votes. So that was the freebies. That but was considered as a freebie. But it should be given to the needy people only. It should not be हाँ given needy to people all the people of. I agree हाँ It with should because be all of given you. to BPL family हाँ only, I below agree जैसे with poverty हमने you. line. राजस्थान के अंदर देखा है कि what are the पहले इलेक्शन से disadvantages पहले of ये this फ्रीबीज freebie? का वादा तो Friends, करते थे जैसे कि फ्री में बिजली देंगे, पर इलेक्शन होने के बाद में फ्री बिजली एक्चुअल में मिलती नहीं है। यहाँ पे काफी ज्यादा पावर कट्स हमको देखने को मिलते हैं, तो फ्रीबीज एक्चुअल में फ्री नहीं है, इसके लिए हमको ही कॉस्ट पे करनी पड़ती है एक्चुअल में। friends, can we discuss about what are the disadvantages of this freebie? Like it's give the fiscal burden to the government, and Yes. apart हाँ from that, at the yes time yes of election when it came, it influenced like the voters started not thinking like in what happen if they select a wrong government are only influencing by freebie, so they don't freely thought about the
to which leader they have to choose, and they फ्रेंड्स हम लोगों lack को पता भी है कि बहुत सारे जितने भी स्टेट है हमारे इंडिया में, सबके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। उस कर्ज हाँ के राइट होते हुए के कारण भी ये लोग मतलब बहुत ज्यादा फ्रीबीज वगैरह मतलब ट्राई करते हैं आई एक्चुअल इलेक्शन में में। फ्रीबीज का वादा ही करते हैं, इनको जो पूरा हम लोग पूरा नहीं फ्रीबी कर पाते लेने में क्योंकि यूज कर इससे रहे हैं वो काफी हम इकोनॉमी लोग पे दूसरे बर्डन पड़ता है। यूसेज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका डिसएडवांटेज तो है ये कि मतलब हम वोट बैंक खरीद रहे हैं कोई भी चीज फ्री में देके, चाहे एजुकेशन हो वाटर हो। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि ये हमेशा ही मतलब इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों हो रहा है, रादर देन कि इलेक्शन से पहले हो। इससे अच्छा ये है कि नॉर्मली मतलब वोटर्स को डिसाइड करने दिया जाए, और बाद में जो भी गवर्नमेंट आती है उसको फिर वो मनी यूज करना चाहिए उन फैसिलिटीज में देने के लिए। एजुकेशन अगर आप पहले ही पानी दे रहे हो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, वो तो सिर्फ आप पैसा मतलब वोट खरीदने के लिए दे रहे हो। इससे बेटर है कि आप गवर्नमेंट में आने के बाद जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। Yes, राइट Reena, रीना। that fiscal amount can be used for the other long-term perspective. Government can think about the how that money can be used for creating some type of the production setup that can help to give jobs to the like youth and other. So and also the when production unit will come, it will give to long-term uh, also government income and income to government and also the youth and other Yes, citizens. Rohit, I if that agree was with you, that Rohit. was for We have to permanent see, we after have to mean election, that that is one very thing we have crucial to be very because clear that nothing in before this world we is give for free. money to If attract the if voters, any then government that is will giving be something to considered free, as it a free means in wire. later future we But have to after pay that particular price of that. So the government we have seen for the giving such freebies, the government have to take a very hefty amount of loan in a very high interest rates, which at last cause in a very high fiscal deficit in India, which long term affecting our Indian economic growth also. Also it इसमें मैं एक simply takes डिसएडवांटेज Also, I ऐड would करना like to चाहूंगा। add Yeah, कि इसमें एक agree डिसएडवांटेज with you. I ऐड want करना to चाहूंगा। add one point that in Sri Lanka, like for example, in Sri Lanka, economic crisis is happened because of freebies. No, friends, Aman, apart from that, maybe freebies, but I think they have other issues, like in the policy, they have issues. So एक्चुअल में उन्होंने काफी ज्यादा they लोन वगैरह almost लिया था, इसके कारण ये भी support एक रीजन है कि वहाँ पे श्रीलंका के Freebies अंदर also इकोनॉमिक a क्राइसिस आया था। major part of that अभी हम लोग particular collapsing दिल्ली of में the देखते our हैं कि neighboring countries because they take loan to fund their freebies budget also. So So that before yes, they Aman, before receive giving Aman, the if I freebies, think first we Aman, I need to would if take like I to our add one because point. they I would ये capital. like to add one point. जैसे कि मॉनेटरी वैल्यू और वोट बैंक के अलावा भी ये क्वेश्चन मार्क है हमारी मॉरल वैल्यूज पे कि क्या वोट लेना ठीक है बेस्ड ऑन फ्रीबीज। मतलब आप किसी की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हो बेस्ड प्रोवाइडिंग फ्री लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स। तो क्या ये yes, सही Rina, है? दैट इज yes, माय Rina, मेरे ये अनुसार ये रिबेट जो issue है ना, it रिबेट जो should be है avoided वो because कैलकुलेटेड भी होना चाहिए। free रिबेट जो है कैलकुलेटेड भी होना चाहिए। उसका मतलब बहुत जैसे दिल्ली में जो है हर एक इंडिविजुअल फैमिली को 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाती है, लेकिन उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल फैमिली को देखा जाए तो वो 50 to 55 मैक्सिमम 60 यूनिट उसका चल सकता है काम, उनका चल सकता है, apart लेकिन वो from that, 200 दे रहे हैं तो इसके कारण वो रिसोर्सेज का बहुत वेस्टली यूज कर रहे हैं, वो friends, वेस्ट तरीके I से यूज कर want रहे to put an example like the Akhilesh government when came, he distributed the laptops to the each student as announced early, but they can utilize it more better way, like they can open the computer centers and give the and provide some training teachers, and that freebies can be utilized to train the student that will so they can get a job and they earn money and they can buy हैं। from that money laptop and uh, like they can create a source of income for her. I her completely and agree इसका मैं with एक you, अच्छा Rohit. एग्जाम्पल दूंगा I would राजस्थान like के to अंदर। add राजस्थान one more गवर्नमेंट ने dimension for बच्चों that को वो particular गरीब thing. अच्छे तो परसेंटेज उसको लाने पे अफोर्ड नहीं कर प्रमोट करने सकते, के लिए अगर उनको कहीं वो फ्री टीच करने लैपटॉप के वगैरह लिए देने के है
लैपटॉप अगर फ्री दिए तो उसमें पुअर लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है, बिकॉज कोई भी चीज हो रही है, स्कीम हो रही है फ्रीबीज के टर्म में, तो उसके दो नहीं, पहलू पुअर हैं। लोगों को भी हेल्प बिकॉज मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट वहाँ ये बोलती है कि आप वहाँ अच्छे पे जो गरीबों की टॉपर्स होंगे, जो बहुत अच्छे ज्यादा परसेंटेज हेल्प हुई लाएंगे, है। उनको लैपटॉप मिलेंगे। तो इससे मतलब उनका कंपटीशन भी इम्प्रूव होता है कि लोग सोचते हैं कि हम अगर अच्छे परसेंटेज लाएंगे तो हमको गवर्नमेंट लैपटॉप वगैरह देगी। तो ये एक अच्छी चीज भी है। पर मैं फ्रीबीज एक अदर्स जैसे कि Yes, friends, पर I जैसे am कुछ agree with सेक्टर all of कंपटीशन का you, लेवल जो but है वहाँ पे point I कंपटीशन का want, लेवल, बिकॉज लोअर लोग what को अगर हम point I बढ़ावा want to देते हैं say, फ्रीबीज के, अगर फ्रीबीज वोट अट्रैक्ट करने के लिए लोअर लोग को अगर फ्रीबीज मिलती भी है, तो वहाँ बिकॉज देयर वोट बैंक आर लोअर पीपुल, पुअर पीपुल, दे अट्रैक्ट बाय फ्रीबीज देयर वोट, बिकॉज rich people cannot be attracted by them. So that's why it is also necessary for giving equality uh, before free by free buys, because after गवर्नमेंट winning the election, फ्रेंड्स government does not uh, after winning the result of election, government does not majorly focus on the poor people. So that's why freebies is very important before the election for poor people. But this is a very drawback of political issue. मैं चला इसका एक डिसएडवांटेज के बारे में बात करना चाहूंगा कि फ्रीबीज के कारण क्या जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आता है। इसके कारण जो मतलब जो पैसे जिस पैसे से रोड का डेवलपमेंट होना था या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना था, वो मतलब सारी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, क्योंकि उसका सारा पैसा आपका फ्रीबीज के now वादे को friends, पूरा करने चला I जाता है। I would like believe I to in want add to one say you, about point. the Shrikant, other but I dimension believe how also believe the जैसे freebies in some ओके, extent also ये स्टेटमेंट make जो है these people कम्प्लीटली make people सही नहीं easy, है, because बिकॉज as the दिल्ली में people are हम know they are getting the दिल्ली में सब कुछ फ्री दिया free जा रहा rice, है, free उसके dal in the बावजूद भी दिल्ली free का culture, स्टेट का जो so they रेवेन्यू है won't वो work that प्रॉफिट में particular है। hard to earn तो their ये money, which हमेशा also affects स्टेटमेंट the करेक्ट Indian नहीं economy. है, बिकॉज I बिकॉज think ये to जो conclude स्टेटमेंट this, friends, जो है friends, आई I वुड think to लाइक टू ऐड वन conclude this, पॉइंट। friends, जैसे हम लोग ये भी to डिसाइड कर conclude सकते, मतलब this, एक रेगुलेशन अथॉरिटी भी होनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ फ्रीबीज आप दे सकते हो और कौन कौन से सेक्टर में आपको देना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स हेमराज आई ने थिंक पॉइंट आउट किया कि हम इक्वालिटी बढ़ा सकते हैं उन लोगों के लिए जो पुअर है, तो पुअर लोगों के एजुकेशन सेक्टर में, या श्रीकांत ने yes, बोला कि जो ट्रांसपोर्टेशन है या जिन एरियाज में हमारा कंट्री लैग कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक है, टेक्नोलॉजी है, तो उन एरियाज में हम फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करें अंडर प्रिविलेज लोगों को, उससे yes, Rina, I am बेटर agree. एडवांटेज ही रहेगा। फ्रेंड्स आई And थिंक वी Rina, ये शुड कम भी डिस्कस रेगुलेट नाउ हाउ रेगुलेट कैन कर वी सकते कल्चर ऑफ फ्रीबीज that is कैन बी स्टॉप्ड इन इंडिया। that come under the government policy. I think that should not be considered as freebie. That will come eventually under the government policies. But I But want to don't you also think point there out the should how be a we can. regulation of how much freebie should be given and to whom? If there ऑफ is no कोर्स रीना, regulation, इसके लिए रेगुलेशन Rina, होना but why चाहिए, बिल्कुल freebie? होना चाहिए। yes. वरना तो इलेक्शन से पहले कुछ भी फ्रीबीज का ये मतलब कर देंगे कि हम फ्रीबीज देंगे तो इससे वोटर्स भी इन्फ्लुएंस होंगे, तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो इसके लिए Yes, बिल्कुल एक रेगुलेशन तो होना why चाहिए। freebie? Why freebie? That should come under the policies. And also I want to point out the how we can overcome this. Like the each and every party should come together, and election commission should take the step like the as a electoral reform, and they should point out some rules and regulation, and so the all parties with so all parties can follow and we can overcome this. I agree with you, Rohit. ऑफ There कोर्स, should be और any वोटर्स को भी काफी budget अवेयर होना constraint should पड़ेगा be कि there. जो How much the freebies, but how much the budget should can be allotted to the particular to distributing the freebies, so that the it Yes, won't this is harm our. already has been it is already as a rule कि how much money you can distribute in the at the time of election. It is already a rule in government of India in It is for the any election. particular political party. It should not be the any budgetary allocation or any particular budget, or we can say multi-million dollar inauguration projects. आई थिंक एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हर एक स्टेट के बजट के अनुसार हर एक स्टेट का जो बजट होता है उसमें से 20% या 30% कुछ एक अमाउंट फिक्स कर देना चाहिए। इससे ज्यादा आप फ्रीबीज में खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ आई से थिंक हमें हमको कुछ वोट Friends, I want आई थिंक हमको वोट भी क्लियरली देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स पार्टी तभी फ्रीबीज देती है क्योंकि वोटर्स इसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो हमको भी एकदम क्लियरली वोटिंग करनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा इसके अंदर कमी आ सके फ्रीबीज के एक अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से भी एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि हमें कुछ बेनिफिट मिले गवर्नमेंट से, हाँ, वो इसको इस बेनिफिट स्ट्रिक्टली के चक्कर डिफाइन में। करना पड़ेगा कि फ्रीबीज क्या है, किस सेक्टर के अंदर हम फ्रीबीज दे सकते हैं। इसको हमको स्ट्रिक्टली डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए लॉ वगैरह बनाएंगे, तभी इसके अंदर हम
कटौती नहीं, कर इसमें पाएंगे। बिल्कुल अवेयरनेस है। का इसमें इसमें जो जरूरत है है, एवरीबडी लेकिन को 60 to अवेयरनेस के 70% इसके लिए लोग जो है सेमिनार भी गवर्नमेंट की तरफ से, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक सेमिनार भी कंडक्ट होना चाहिए एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत लेवल, स्टेट लेवल, तो दैट्स व्हाई नॉर्मल पुअर पीपल, जनरल पीपल कैन बी अवेयर, उनको अवेयरनेस मिल सकती है कि नहीं, हमें अपने अकॉर्डिंग अपने मत का अधिकार जो है अपने हिसाब से करना है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रीवियस के इन्फ्लुएंस में आकर करना है। तो ऐसी कुछ सेमिनार कंडक्ट करानी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। Yes, yes, I am agree with you, Rohit. The election commission should come forward and take some steps, like as you said, the awareness of the citizens, and also come with the strict rule and regulation, and also clearly define, clearly give a definition of the freebies which should be considered freebies, because the certain what problem came हाउ मतलब लाइक अगर गवर्नमेंट कुछ आई थिंक रोहित, अगर एक ऐसा, हाँ अगर रोहित एक ऐसा लॉ आ जाए, इलेक्शन कमीशन फर्स्ट की उन्हें सेमिनार करना चाहिए। दूसरी चीज की अगर किसी को वो ऐसे कंडीशन में पाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उनको उनके लिए कुछ पनिशमेंट भी होना चाहिए। दैट्स व्हाई दे कैन अवॉइड दिस फ्रीबीज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। I also रोहित, believe there एक्चुअल में should अगर be a इलेक्शन awareness कमीशन program ये should भी be लो कर दे कि conducted by अगर आपने different कुछ society, फ्रीबीज के different लिए जो अनाउंस parts of किया the है India to उसको aware आपको people पूरा to ही करना not है। be इसके लिए in अगर कोई trap लॉ of the बना दे, freebies. तो इससे भी हम अगर लॉ बना दे इलेक्शन कमीशन, अगर आपने जो फ्रीबीज का वादा किया आपको पूरा करना है, तो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा फ्रीबीज देने से बचेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि अब इनको हमको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या है, फ्रीबीज अनाउंस तो कर देती है पर पूरा नहीं कर पाती। फर्स्ट अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी पर, या कुछ उनके प्रति पनिशमेंट होना चाहिए अगर कोई उनकी फ्रीबीज करते अकाउंटेबिलिटी हुए, तय कर दे, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर दे कि अगर आपने उनके फ्रीबीज के लिए कहा है से तो ज्यादा अगर फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उस कंडीशन में उन्हें पनिश करने का भी प्रावधान लागू करना नहीं, चाहिए। पनिश करने के अलावा अगर ऐसा भी बोल दे कि आपने जो फ्रीबीज के लिए जो बोला है उनको आपको पूरा करना है, तब भी फ्रीबीज करने से वो बचेगी, क्योंकि हर फ्रीबीज पूरी नहीं हो पाती है। जैसे आप बोल तो देते हो कि आप फ्री में बिजली दोगे, फ्री में वाटर, पर देते नहीं है ना गवर्नमेंट। हम राजस्थान के यस अंदर देख रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि लोन माफ कर देंगे, पर कुछ नहीं होता है। अगर आपको फ्री बिजली Yes, देने का भी बोलते हैं तो नहीं होता है। तो that can also be one more point. Yes, I completely agree with you. If they promises to complete fulfill the requirement before election, they give promise to the common people. After election, after winning election, if they fulfill all their promises by very regularly, very without any corruption, so that can also be very beneficial for the people. Okay, time to So, conclude, yes, friends. One of you can conclude now. Thank you, everyone. I, on behalf of the whole group, glad to be conclude the session. As we see, this group discussion is a very healthy one. Different points have been raised by our different participants. Some talk about its favor, like Yogendra said, the positive impact of freebies in the time of Corona, and also Hemraj also raised the issue, or we can say highlighted the point that the educational freebies, which will be helping India to grow, but different members of the group also oppose that by talking the different negative sides of the freebies, and also different impacts also been brought in the highlight, like just like Rohit said, it creates a high level of physical burden to the government and its economy. So this and also different types of solutions also been discussed among the group members, just like increasing the awareness, and also just Rina have highlighted that there should be a commission or being a constraint to the allocation of the freebies. So I think this is a healthy one. Thank you. Thank you. Okay, so Ayush, you could have taken this, concluded in a better way. I mean, you could have taken your own time. You should not be in a hurry to conclude. Take your own time and explain whatever was discussed in detail. And if you want to conclude, then you should have written something. Entire discussion, you have pen and paper with you. So make sure you are writing a couple of very, very important points if you want to conclude. So the person who wants to conclude the group discussion, from the very beginning, he should note down a couple of things in the paper with the pen, so that he reads it and very meticulously explains the good points which are spoken, Ayush.
And as I tell many times that conclusion is the easiest thing to do, and last impression is the best impression sometimes. So the observer will see your performance in conclusion, and he will surely take you in. So conclusion can be easier thing, but only if you keep on noting it down. Now, Rohit, you started the discussion. You introduced the topic. So there were some good things and bad things in your introduction. Good was like you could define. You said that, okay, let me define what is the freebies. The definition part was okay. You said it is a currently relevant. So you could have said that, friends, India just had its general election 2024, and we got a new government in June. So I think if I'm not wrong, 6th June was the government formed. So just 2-3 months before that, political parties started giving the freebies. So this freebies is always actually this is a topic in discussion. Why? Because in India, still India is not one nation, one election. So elections keep on going entire year. So whenever there is election in state government or something, then political parties come forward and start, providing the freebies for their political gain. So it is in relevance. This topic always in current actually, and we should discuss about what is the need, why political parties go for freebies. Is there some disadvantage or advantage of freebies? We should discuss that. And if there is a disadvantage, what can be done? So, what can be the typical classification of this topic? After you define the topic freebies in the introduction, what are the things in favor of it? What are the things against it? And what can be done? Maybe if I can share with you people the top, the document which I have prepared for this. It's visible to you now. So, yes, the culture of political freebies in India. So, the first thing should be like definition of it, right? We should define this topic. What is this topic all about? That is the first definition should be there. And after that, types of freebies. Some of you gave example that what is the meaning of freebies. You can always say like some political parties gives free food grain, some political parties give cycle, some political party gives free electricity, some political party says okay we will give you this much money directly in your account will come. अगर आप देखोगे तो हर political party is promising something to the voters, and that is to allure the voters, right? So type of freebies वो आप दे सकते थे. पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू नीड नॉट टू टेक द नेम. नन ऑफ यू हैज टेकन द नेम दो, बट आल्सो नेम इज नॉट रिक्वायर्ड. whenever there is something which is in negative way, so you should not name anybody. Positive way may you can take the name. So what is the reason why this is happening? Freebies. What is the reason behind freebies? So obviously political advantage, that is the reason. So what is the argument in favor of freebies? Okay, freebies goes to the poor man. Even if the money goes to his account, looks like it is helping it. Then it is a social welfare part of the government. Maybe at the time of government, as I think some of you said that okay, why not after the election? So it can be after the election also, but if it is during the election, no doubt the benefit goes to the poor. At the same time, benefit comes to the political party also. Eventually, it helps the poor. It helps the people whom it is being given. It stimulates the economy because when economy is in recession, the way it is in India right now, if you want to pull economy out of recession, you need to spend money, and this is one of the ways. If you provide the freebies or the benefit or the money to the poor, they will start purchasing things. They start purchasing things. Business start rolling out, moving, and that is how it goes. Government fulfills its responsibilities, so that is the some arguments in favor. Against are also there, lot of there, because it puts a lot of debt on government, stress and strain on government. Government takes it loan from international market and then huge debt on government. So it is not sustainable. Money should be invested not in freebies but in creating the infrastructure. You give somebody money, he will spend it. You enable him to earn money, that will remains long lasting with him. To enhance his skill so that he becomes capable to earn, rather than give money to him and put him on crutches. That should not be there. It should not be populist
policy, so it also interferes with the freedom of voter decide. I mean, political party for them create the culture where people become lethargic and they don't put effort. Many times misuse of the taxpayers' money, because like it becomes a ritual. The farmers, if they know that during the election after 5 years all our loans will be waived off, so they will take a loan and they will not return it. That is a disadvantage of it. So then what can be done for that? Many of you suggested election commission also. So I think somebody was giving the concept of election commission should be, like I think Rohit Yadav gave the concept of election commission, that why election commission cannot be, should take into consideration. So then also, like some of you were of the opinion, like I think Reena was talking about, why they are not spending after the election. If they spend before or at the time of election, it looks like political mileage they want to draw. So why not after election? In that case, the spending will be on a better policies rather than only to make somebody happy. And the regulating authority point was also good given by Reena. Aman was giving example of Sri Lanka. So Aman, some people objected to that. So unless until you are very sure about the example, don't give it. Examples always help, but they should be you should verify that they are correct. Yogendra mentioned about I think Ayush had talked about current how to improve the culture and debt on the government. Ayush was giving this point. So whenever you will give some point, friends, which is a new point, then mileage will come to you. So he will give you some kind of advantage of that. So in today's GD, I think Reena, you participated, but very, very late. It has to be in the beginning. Shrikant kept on participating, but Shrikant don't give much gap. Yogendra, you were not speaking. Most of the time you were silent only. Himraj was participating. And then Rohit was participating. Rohit Yadav was also speaking. So regular participation and speaking is the first stage. And most of you were not listening, or you were not appearing to be listening. See, listening is one part, but you should look like listening. That is another part. You should give your ear to other, and it should look like that you are listening to others attentively. And you should nod and you should listen to other. That is very important in the GD. ऐसा लगना चाहिए कि तुम दूसरों की बात सुन रहे हो और रिस्पॉन्ड कर रहे हो. अगर तुम स्टैटिक होके बैठे हो, इट डज नॉट हेल्प. तुम्हें स्टैटिक होके नहीं बैठना चाहिए. तुम्हें दूसरों की बात सुननी चाहिए, नॉडिंग करनी चाहिए, और दूसरों की बात को पकड़ के अगली बात बोलनी चाहिए. डिस्कशन वही तो होता है. डिस्कशन इज लाइक यू आर इन्वॉल्व विद अदर्स. अगर तुम्हें यूनिलेटरल वन साइड कम्युनिकेट करना है, दिस इज नॉट अ डिस्कशन. अपना पॉइंट दिया फिर चुप होके बैठ गए, दैट इज नॉट डिस्कशन. दूसरों का पॉइंट सुना, उसमें अपना पॉइंट ऐड किया, फिर डिस्कशन किया, दैट इज द डिस्कशन एक्चुअली. दैट इज हाउ इट इज टू बी डन. तो ये था मेरा फीडबैक आप लोगों के लिए. अभी यू आर टू गो अ लॉन्ग वे. प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स, जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपको इम्प्रूवमेंट आएगा. दूसरों को भी देखो, दूसरों को सीखो, दूसरों को देखो वो कैसे बात कर रहे हैं. आपके पीयर्स हैं, आपको कहीं ना कहीं यही कंपटीशन में मिलेंगे. और लर्न करो, और जो आपकी लिमिटेशंस हैं उनको दूर करने की ट्राई करो. एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, राइट? बाकी प्रैक्टिस इज ऑल फ्रेंड्स, नथिंग एल्स. Like nobody has taken lectures on how to swim or how to ride the bicycle. साइकिल चलाने की बुक आप लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन तुम सब लोगों को साइकिल चलाने आती है. आप गिरे भी, आपको प्रॉब्लम भी आया, आपने प्रैक्टिस किया, एंड देन एक दिन आप बड़ा अच्छा साइकिल चलाना स्टार्ट किया. तो ये प्रैक्टिस से आती हैं चीजें. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा आएगा. तो डेली प्रैक्टिस करो और लर्न करो. दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं. एक प्रैक्टिस करते हैं लेकिन लर्न नहीं करते. दूसरे प्रैक्टिस करते हैं, बड़ी जल्दी लर्न करते हैं. अभी आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में हैं. प्रैक्टिस करो, दूसरों से सीखो, खुद भी सीखो, और जल्दी से उसको कन्वर्ट करने की ट्राई करो. राइट? चलिए.